Hello, bachcho. Let's read the question. The question says from the following statements regarding hydrogen peroxide, choose the incorrect statement. It can only act as an oxidizing agent. It decomposes to exposure to light. It has to be stored in plastic or wax-lined glass bottle in dark. It has to be kept away from dust. Okay? So let's do the question. Because in hydrogen peroxide the oxidation state of oxygen is -1, that can be changed to -2 and 0. So यहाँ पे आपका क्या हो जाता है बच्चों, दिस इज डन बाय रिडक्शन, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, oxidation हो रहा है. Therefore, hydrogen peroxide can both as act as a both oxidizing agent and reducing agent. So the statement that it can only behave as an oxidizing agent is a wrong statement. ठीक है? It can both as behave as an oxidizing and reducing agent. So it decomposed on exposure to light. When hydrogen peroxide is exposed to light, it decomposes to hydrogen and oxygen. Therefore, this statement is correct. It has to be stored in plastic or wax lined glass bottle in dark. बच्चों जो जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ग्लास बॉटल में स्टोर करते हैं, द रफ सरफेस ऑफ द ग्लास बॉटल दैट इज योर अल्कलाइन ऑक्साइड्स होता है उसमें, ठीक है. देयरफॉर दे डिकम्पोजेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर एंड ऑक्सीजन में डिकम्पोज कर देते हैं. देयरफॉर वी हैव टू स्टोर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन ए पैराफिन वैक्स्ड लाइंड और प्लास्टिक ग्लास बॉटल्स इन डार्क, ठीक है. नेक्स्ट इज इट हैज टू केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट बिकॉज when exposed to dust, the interaction of hydrogen peroxide and dust is explosive in nature. Therefore, it should be kept away from dust also. So these are also the correct statement. So the only incorrect statement is it can only act as an oxidizing agent. So the correct option is A. I hope you understood well. Best of luck.